Do Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात खवातीन Nazarene. बूढ़े बच्चे Kusat. खुसट Sorry, did I? Sorry. खुसट्स द For खुसट all you 7,000-year-olds out there, my apologies. सलाम है आप लोगों को हमारे शो दो मस्ताने पे हाँ. दो मस्ताने दो मस्ताने Do hame. presented by Oklu based in Dubai Yes, I believe. and their motto is Oh, it's just imagine. reimagine Why do I keep effing that up? reimagine entertainment Jeez. reimagine entertainment आजकल भाई ये there are market leading AI powered and this whole AI thing is really getting to me. Okay. कहा ये जा रहा है कि अगले 20 से 25 सालों में a lot of the jobs will be controlled by robots, It's already happening. by AI, yeah. If you look at all the assembly plants, most of them, whether they're car plants, go out to the Oshawa area, man, or Yeah. go into the States in Michigan, near Detroit, where there used to be thousands of people employed, man, earning a very good living. They're all gone, man. It's Yeah. just a bzzz, 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 bzzz. Everything, no, not just industries, people in the services sector, Yeah, banks, even doctors. yeah. Robots will be able to fix people up They'll be like, better than doctors can. Mr. Henderson, how are you feeling today? And it's just a goddamn robot talking. Doctors खुद जाएंगे उनके पास कि भाई हमें भी ठीक कर दो. हमारा भी मतलब Nobody looks bypass after कर us. लो, हमारा bypass कर लो. Actors, a lot of CGI and AI intelligence is being used to make the actors look younger. Not just that, man. और कुछ साल बाद they won't even need the actors. I mean, if you watch one of the Marvel movies with क्या नाम है इसका यार, Iron Man, क्या नाम है इसका? Robert Downey. हाँ. There was one movie where they showed his younger age when he was 18, 21 years old, and I couldn't believe what I was seeing, man. The way they just did the CGI, it was incredible. Yeah. So, you know, what they're going to start doing now is they're going to take people out of the grave and really have them back. Yeah, Back and start a Elvis movie. Presley is going to be starring in the next Mission Yeah. Impossible. You'll see, you know, Rishi Kapoor will be back, you know, Dilip Kumar will be back in his early ages. Cars Part 7 बनेगा. Cars ऋषि कपूर Part बनेगा. 7. हाँ. उसके जो उसका बेटा है उसका जो पोता है उसका पोता भी देखेगा उसको. अपने पता नहीं कितने परदादा के परदादा के परदादा. Like Raj Kapoor, man, even his father. Even his Kapoor's father is yeah. going to come back and play a role of a 25-year-old. Yeah, I would love to watch an AI version of Donald Trump because he's my favorite person ever. I think he is my role model. I don't have any role models in my life, but there's two people, Andrew Tate and Donald Trump. Oh yes, and I think we've talked a lot about both of them. Both of them, yeah. तो आज छोड़ो इन politicians को. Actually, Andrew Tate's not even a He's politician. not really a politician. He's just a tick. He's a tick He's who a tick. talks sometimes. He ticks and talks. Ooh, that's a good. That's not a bad joke. That's a good joke. That was a badass daddy joke. Dad joke? No, That was a that's daddy. a good joke. That was a good joke, That's wasn't a it? good joke. It's a tut joke. How about we talk about Olivia Chow? Do you guys know who Olivia Chow is? No? टोरंटो की नई मेयर है भाई. कोई मजाक नहीं है. कोई मजाक नहीं है. वो नई मेयर बन गई है इस पूरे कायनात की नहीं टोरंटो की. पठान बन गया. But here's the funny thing that I want to talk about today. She's the new mayor of Toronto, and the first thing she does, first day at the office, is no, she did not bring a sink like Elon Musk. Yeah, that Nothing was like weird, that. man. You remember that, man? Yeah, he brought a sink to He brought work, a sink to work. and he told his employees, "Let this one sink in." Yeah, that's what he actually said. Was that real, man? It was that real. Apparently, it was real. That's not a rumor. That's actually what he did. And I think that was his form of an icebreaker, or Yeah, and I don't know. And the ice he broke, and the ice he broke yeah, really broke. it broke. Broke so hard The ice that he broke. broke. इतनी जोर से ब्रेक हुई कि वो it वो melted. कुल्फी बन गई. मतलब वो उसकी वो पानी बन गया वो. पॉप्सिकल बना लिया उसको. पानी बन के बह गया वो. हाँ. And now his well, let's not talk about it, Elon. Yeah. We want to focus on Chow. on Chow. No. No, क्या नाम let's है not. इसका? Let's not do that. Olivia Chow. Olivia Chow. No, The new mayor of we're not Toronto. doing. No, Of Toronto. Mr. Biryani, we can't do that. Okay. Oh,
तो पहला काम जो वो करती हैं ऑफिस में आके is she didn't bring a sink, she brought a bed, and figuratively speaking she brought in 250 beds. What do you mean 250? Yeah. Her first task is to order 250 new beds for refugees. Okay, seriously? Or No, I'm serious. Like, it's right here. It's on CP24. Toronto Mayor Olivia Chow is calling on the city to open 250 additional shelter spaces for refugees. No, that's shelter spaces. No, that's not beds. 250 beds. You know, That's but that's the space. Shelter beds. बिस्तर. बिस्तर. वो जाएगी रेफ्यूजी से कह के जाओ लेटो बिस्तर पे. लेटो और उठना मत. यार हम भी चले वहां जाके अपना आराम से यार सुकून मिलेगा यार. The way things are going, I think I'm going to need a bed soon. Yeah. रूफ भी चली जा रही थोड़े दिन में. आवाज भी जा रही है मेरी. बहुत कुछ जा रहा है. खैर जहाँ तक जाने की बात हो रही है, I think the last few episodes have been a little dry, and here's the reason. Yeah. We could talk about everything else. We talk about the Chows and the Trumps and the Tates. The Tates. And the Djokovic's and the Alcarazes. The Alcarazes. लेकिन ये इमरान खान का जिक्र क्यों बंद हो किया यार इस चैनल पे? क्या चक्कर क्या है? कोई एम्बार्गो लगा है क्या? एम्बार्गो लग गया है क्या? Talk about Imran Khan, man. Come on. Well, okay, look. Please इन पे फोकस कीजिए. ये आज इमरान खान पे बहुत बड़ी स्पीच देंगे. नहीं, ये कोई बड़ी स्पीच नहीं होगी. खर्च हो जा रहे हैं, इतने परेशान हो गए हैं. हाँ, क्योंकि यार मुझे कई बार मुझे सोचना पड़ता है कि मैं मतलब जब मैं कुछ कहूँगा तो मतलब how much trouble will I actually get into? I want you to get into trouble today. You want me to? You know what? I'm kind of like that. I'm in that kamikaze mode right now, man. So your viewers want you in trouble now. They want me to be. The channel wants you in trouble. Yeah. This desk demands that you get into trouble. This chair is telling me get me in trouble. क्या बताओ भाई, दुनिया को बताओ आज क्या हो रहा है? इमरान खान को कब मारेंगे ये लोग? कब मारेंगे? You know, in every speech that he gives to the rest of the world, he's always, well, they're going to arrest me anytime now for what I've done for the Pakistani people. People. So the thing is, first of all, there's a lot of stuff that's actually happening right now. Yeah. There are extensions that are being talked about. There with Nadeem Anjum, who's the ISI DGR. Okay. There are discussions about Asim Munir's, some of his right-hand henchmen actually having secret talks with Imran Khan right now at Zaman Park. About? Oh, so weeks ago, it's such a fluid motion here in Pakistan right now. Weeks ago, we were looking at doom and gloom about Imran Khan. Everything was done. Party is split. There's a new party being put up by Pervez Khattak, who was a right-hand man of Imran Khan's party. He's now opening up a new party under the PTI, another PTI banner. So that was what was happening over the last little while. But guess what? You know what? I'm looking really sharp on the screen right now, man. Yeah, because you're talking about Pakistan. Yeah, that's why. Anyway, so what's happened is, what do you call it when you say with palti? Like it just पलट गया. पलटी कहते हैं उसको. पलटी कहते हैं. पलटी को पलटी कहते हैं. पलटी को पलटी कहते हैं, उसको बाल्टी नहीं कहते. Anyway, municipality. I don't know if there's some sort of ruhani or some sort of divine intervention in Imran Khan's life. I don't know if it's because of his wife, Bushra Bibi. I don't know what's happening. But apparently, this whole talk about arresting him before the elections, that is no longer going to be the case. So they are not going to... He's been talking about how he's going to be arrested for the past couple of weeks, but... They're not doing it. They're not doing it anymore. Is it because he keeps talking about it? They want to go against his word to prove him wronger than he is? Sometimes I think that... I want to say something right now on air, Abdullah. Please. And get in trouble, man. Come on. No, I'm not going to get in trouble. Because I think I'm speaking in the favor of the establishment by saying this. That whole thing about May 9th, man, when he got arrested. How do we know that wasn't concocted? Yeah, I think he knew what he was getting into. No, I'm not talking about that, Abdullah. I'm saying that, okay, you know how he keeps saying that this was a sajish, ye hua, wo hua. वो मतलब सुप्रीम कोर्ट गए, वो बेचारे इमरान खान साहब वो कहने गए, हाँ बिल्कुल साजिश हुई, हमारे खिलाफ साजिश हुई. ठीक है ना? मुझे ऐसे लगता है कि ये पूरा प्लान जो था ना, ये इमरान खान का था.
वो तो मैं कह रहा हूँ कि उसको पता था, he was scripted, he was an What do you actor. mean? He was sitting like this inside the courtroom, and they get out and this and maar peet tod pod sab kuch wo ho raha tha. That the whole idea behind that was created by Imran Khan. कई बार टेक हुए थे उसके. And he was being pushed into a car. You've seen, we all saw the TikTok he got videos, man. knocked on his head. Oh, on his head. So it was more him saying, okay, hit me from here. Okay, now grab me from here. वो डायरेक्टर था. So, how do we know? I love Imran Khan. Look, anyone who's going to be watching this, man, I don't know if there's going to be like crazy toxicity coming out right now from anyone. I'm telling you right now, I love the man. I think he's a decent, honest, moralistic man. But maybe he had to turn his ungli tedi too to get the ghee out. Bas. I'm getting to my point. So he is doing things that are very unconventional. He's finally becoming a politician. He's doing politics at the highest level, man. इतने साल बाद What did you say, Abdullah? What did you say that he keeps talking about himself getting arrested? And because he keeps saying that, oh, I'm going to get shot, I'm going to get killed, I'm going to get arrested, you know, they're not going to let me do this. That's all by design. Yeah, it's a bluff. It's a double bluff. He's handcuffing the establishment. And the reason why the establishment doesn't like Imran Khan is because they know him really well. They know him really well and they know how dangerous he can be. Wow. Yeah, Abhi, you should talk for 5 minutes. I was absolutely enamored and just absolutely enamored, yes, very just mesmerized. Mesmerized. Lekin I couldn't tell if you're on his side or the establishment's. Listen, the one thing about Mr. Karahi, he's on everyone's side. And I think what you're doing, what Imran Khan's doing. What are you talking about? Is he taking lessons from you or are you taking lessons from him? Well, we both sat together in you know, in council. Anyways. Anyway. Listen. Wrap up करते हैं? मैं wrap up करने से पहले जरा दिलचस्प बातें करते हैं. देखो तुमने ये open of the can worms तुमने किए थे. Open of the can worms. 2 minute है लेकिन. I don't care about 2 minutes. Hey, listen. Keep going and keep rolling. Imran Khan is the master stroke player, baby. They were doing all these different meetings. Nawaz Sharif, Shahbaz Sharif, his daughter. People say Zardari is one of the most wily. He's the wily coyote, man. He is the wisdom master when it comes to politics in Pakistan. But man, Imran Khan is making a fool out of everyone. PDM is on the back foot. They don't know what's going to happen with People's Party right now. Nobody really knows what's happening in Pakistan. Nobody ever does. Except for one man. Imran Khan. Imran Khan. Oh, I thought you were going to say Donald Trump, but... Donald Trump, he's very Donald Trump. Like, people think that Donald Trump is a maniac, like a madman. But the guy's a genius. So is Imran Khan. But then I hear this other theory that Imran Khan will get elected because of all of that what you just said, और फिर उसको आर्मी जो है उसको उड़ा देगी. No. Army, no, मतलब फौज जो है ना वो ऐसा chance लेगा भी नहीं. Can't say army. Can't say army. Well, whatever, man. Yeah. Here's the deal. If people are thinking that because he's tied the army, should I say the establishment's hands behind his back, man, that all of a sudden there's going to be this blind rage by Asim Munir or by anyone and they're going to wipe him out after he becomes prime minister. That's the stupidest thing in the world for them to do. They're not stupid. That's a very smart establishment over there. I love them. They're smart. So they're not going to take chances like that. They'll bide their time. They'll wait for their time. But right now, I think it's going to be Imran Khan's time. And I know the establishment knows that. And they know that we tried everything in the book. We've done the old ways of thinking. We're the Neanderthals. We've been using the same kind of gimmick for the past 75 years. But it hasn't been working. So they've understood that. So now they're going to bide their time and they're going to wait when Imran Khan comes into power. And then they're going to use Imran Khan's power against him. You'll see. That's what's going to happen. Chali, I think I've said this a bunch of times before on previous shows कि Allah करे आपकी ये जो prophecy है वो सही हो और हमारे मुल्क को इससे फायदा पहुंचे, because nobody cares about anything else or anyone else except for the country's best interest. And before we end off here, Abdullah, and you're 100% right, Ameen. Ameen, summa ameen. Pakistan, inshallah,
will be one of the more powerful countries against the wishes of the global establishment. Allahu Akbar. And when he says global establishment, he does not mean is not real. On that note, let's take a break. We'll be back. That was actually brilliant. The Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपका फेवरेट सेगमेंट लेके, जिसका नाम है मेरा प्यारा पाकिस्तान। मेरे सेगमेंट को बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत सारे आपके कमेंट्स मिलते हैं जिसमें इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हम पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जिसे सुनकर हमें अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होता है। तो आज मैं आपके लिए इस प्रोग्राम में क्या लेके आई हूँ? मज़बूत और पुख्ता मकानात, कुशादा सड़कें, बारिश के पानी की नक्कासी का बेहतरीन इंतज़ाम, कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने की सहूलत, साफ़ पानी के कुएं और खुशबख्श और पुरफ़िज़ा मकामात, साथ में जदीद तर्ज की खूबसूरत इमारतें। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं किसी हाउसिंग सोसाइटी की तशहीर कर रही हूँ, या फिर ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी मगरबी मुल्क के शहर का जिक्र कर रही हूँ। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि मैं एक ऐसे शहर का जिक्र कर रही हूँ जो आज से तकरीबन 5000 साल पहले पाकिस्तान के सूबे सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंध के किनारे आबाद था। और ये शहर जो है दुनिया का सबसे पहला कदीमी शहर कहलाया जाता है, और इस शहर का नाम था मोहिंजो दड़ो। यकीनन आप सब ने मोहिंजो दड़ो का नाम सुना होगा, मोहिंजो दड़ो के बारे में हम दरसी किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन जो इसकी तारीख़ी अहमियत है उससे बहुत सारे लोग अभी भी नावाकिफ़ हैं। इस शहर को दुनिया का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का एजाज़ हासिल है। मोहिंजो दड़ो को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पहला अर्बन सिटी भी कहा जाता है। मोहिंजो दड़ो तकरीबन 2500 कबल मसीह में तामीर किया गया, और ये वही वक्त था जब अहराम मिस्र की तामीर जारी थी। इसका रकबा तकरीबन 500 एकड़ पर फैला हुआ है, और ये अपने तर्ज़ तामीर में बिल्कुल अहराम मिस्र जैसा अजूबा है। ये कदीम शहर एक बड़ी गली से शुरू होता है और आगे जाकर बाकी गलियां एक दूसरे को तकरीबन 90 दर्जे के ज़ाविये पे काटती हैं, जिसको देखकर माहिरीन आसार कदीमा ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये शहर यकीनन किसी बेहतरीन मनसूबाबंदी के तहत बनाया गया। इस शहर के आसार कदीमा से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनकी तहरीर अभी भी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ सके हैं, नहीं समझ सके हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शहर में अभी भी बहुत से ऐसे राज हैं जो कि पोशीदा हैं और जिनको जानने की ज़रूरत है। यहाँ रोमन तर्ज का हम्माम, जिसे मशहूर हम्माम कहा जाता है, या ग्रेट बाथ जिसे कहते हैं, वो भी मौजूद था, जो तकरीबन 900 स्क्वायर फीट का जो टैंक है उसमें फ़िट हो सकता है। और उस ज़माने में यहाँ पे इंडस रिवर का पानी जमा किया जाता था। मोहिंजो दड़ो में साफ़ पानी के 700 कुएँ मौजूद थे। यहाँ हर घर में साफ़ पानी की सहूलत और बैतुल खला का निज़ाम मौजूद था, और गंदे पानी की निकासी के लिए ज़ेर ज़मीन नालियाँ भी मौजूद थीं। इस शहर से पाई जाने वाली कीमती धात से बने हुए ज़ेवरात और बर्तन से यहाँ के शहर के लोगों के सकाफ़ती मिजाज की भी अक्कासी होती है। ये शहर अपनी तामीर के तकरीबन 600 साल बाद तबाह हो गया था, लेकिन किसी को असल वजह नहीं पता। बाज़ माहिरीन के मुताबिक सकाफ़ती निज़ाम की तब्दीली और बाज़ के मुताबिक दरियाए सिंध का सैलाब इस शहर को ले डूबा। इन तमाम तफसीलात से पता चलता है कि आज से 1000 साल पहले यहाँ रहने वाले तहज़ीब की एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, और हर इंसानी मिजाज के मुताबिक वहाँ पे सहूलत मौजूद थी। लेकिन ये शहर अभी भी कई राज लिए हुए है, जिसकी तहकीक में आज भी माहिरीन और मुहक्किकीन लगे हुए हैं, और हर आने वाला दिन कुछ नए हक़ाइक़ सामने लेकर आता है। लिहाजा ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मोहिंजो दड़ो किसी हैरत कदे से कम नहीं। दुनिया में लोग
अहराम मिस्र को देखने जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी अहराम मिस्र जैसा एक अजूबा मोइंजो दड़ो की सूरत में मौजूद है। बस ज़रूरत इस अमर की है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इसको फ़रोग़ दिया जाए। अगर हमारे सियाहत के शोबे को फ़रोग़ दिया जाए तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस किस्म के कई कीमती ख़जाने मौजूद हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम मज़ीद दुनिया में रोशन कर सकते हैं, बल्कि हमें माली और माशी इस्तेहकामत भी दे सकते हैं। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और मेरे इस इन्फॉर्मेशन के बाद बहुत सारे लोग यकीनन कोशिश करेंगे कि मोइंजो दड़ो जाएँ, वहाँ के आसार कदीमा को देखें, और जो लोग जा सकते हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर जाएँ और हमारे मुल्क की इस कीमती ख़जाने की दुनिया को भी मुतारफ़ कराएँ। तो अब मुझे इजाज़त दें, मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने अगले प्रोग्राम में इसी तरीके से एक मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Good return. Yes, yes. Hello, hello. कैसे हैं How are you? साहब? Good. बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बढ़िया, very good. आपके पास एक गुजारिश लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। हाँ जी, बोलिए। So I've been investing my money into stocks, crypto, और कुछ खुदा का करना ऐसा हो रहा है कि ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं। Oh no! तो आपके पास मेरी गुजारिश ये है कि कोई ऐसा हल बताएं, पैसे लगे थोड़े लेकिन इन रिटर्न बड़ा चाहिए आपको, समझ गए, सबको बड़ा चाहिए, सबको बड़ा चाहिए, बिल्कुल। समझ गए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कम, ये तो दस्तूर है, दिस इज द लॉ। लो इन्वेस्टमेंट ग्रेट रिटर्न, है ना, ये हमने करना है। तो आप पानी पीते हैं? वाटर। यस यस, वाटर, पानी। ये जो पड़ा आपके पास पानी, आप पानी पीते हैं? कौन नहीं पीता ये पानी? हर एक तो पीता है। कई लोग होते होंगे सर, तभी हम पूछ लेते हैं कि पानी पीते हैं कि नहीं, तो आप पानी पीते हैं। यू ड्रिंक द वाटर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। अब आप पानी पीते हैं तो मैं आपको सिर्फ एक काम दूंगा। अब ये देखिए, सलाह बहुत जरूरी है, सुनिएगा वेरी केयरफुली। आपने क्या करना है, आप जैसे काम पे सुबह जाते हैं, वापस आएंगे, यू रेस्ट एट होम, वेक अप एट नाइट, रात को उठिएगा। ओ, तो रात को उठिएगा, रात को उठिए। सुनिए, पहले बात सुनिए। देखिए, ब्रोकर हम है ना, इन्वेस्टमेंट देखिए, है ना, तो बात सुनिए। तो आप क्या करेंगे, आप रात को हर रिसाइकल की जगह पे, जहां पे कूड़ा होता है जमा, वहां पे आप जाएंगे, जहां पे कूड़ा, पूरे शहर में जहां कूड़ा इकट्ठा होता है, अब वहां पे जाके आप ऐसी सुंदर सी प्लास्टिक की बोतल लें। पर देखिए, जरूरी बात, ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, पानी नीचे, खाली बोतल नहीं, खाली बोतल। ठीक, खाली बोतलें ढेर इकट्ठी कराएं, और साहब रात को घर ले आए। ठीक है। और उनके अंदर पानी भरे, अपने टैप से निकाल पानी भरे, सुनिए, पानी भरे टैप से निकाल के, उसके बाद ये ढक्कन लेके इसको ऐसे कस देना। अच्छा, अब इनको आपने इकट्ठी करना, सुबह दुकानों पे जाके बेचना है। जीरो इन्वेस्टमेंट सर, 100% प्रॉफिट है। हो गया जी, हो गया। बताइए। मैंने आपको बताया है कि, अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी रात को जागूं, बोतलें इकट्ठी करूं, टैप वाटर भरूं और फिर उनको बेचूं। मुझे कोई और आइडिया, कोई अच्छा आइडिया दें, साफ सुथरा आइडिया। अच्छा, जो कचरे में ना जाना पड़े मुझे। इन्वेस्टमेंट करनी और रिटर्न चाहिए ना, ठीक है। जी बिल्कुल। कॉफी पीते हैं? कॉफी कौन, जिंदगी में एक ही अच्छी चीज है मेरी, वो कॉफी है जिसने जिंदा रखा हुआ है। कौन नहीं पीता? मैं आपको मारना नहीं चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा जी कि कॉफी में आप एक कॉफी में कम से कम $3 खर्च करते हैं। 2 कॉफी आप लेंगे, आप $6 खर्च करेंगे। 30 दिन आप कॉफी पियेंगे, $180 आप ऐसे ही खर्च कर देंगे। आप काम क्या करेंगे, आप कॉफी मत पिए, पैसे बचाएं। आप देखिए, वो पैसे जो आप बचाएंगे, ठीक है, आप हमारे पास लेकर आएंगे। चले, हम उनको इन्वेस्ट करेंगे और आपका रिटर्न। चले, मैंने मान ली आपकी बात, मैंने कॉफी छोड़ दी, जिंदगी में खुशी खत्म हो गई, $180 भी बच गए महीने के। किधर, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे आप वो मेरे पैसे जब मैं लाऊंगा आपके पास? हमारे दोस्त की कंपनी में। ओह, तो आपके दोस्त कंपनी भी चलाते हैं? कौन सी कंपनी है आपके दोस्त की? जी, वाटर बॉटलिंग कंपनी। और कौन सी कंपनी? जीरो इन्वेस्टमेंट, 100% प्रॉफिट जी। हो गया जी, करिए।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सुनिए, इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहता हूँ आपके साथ, मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन कोई कंपनी जो है ना वो चेंज कर ले, कोई नई कंपनी लेके आए इन्वेस्टमेंट में। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। करिए। फास्ट फूड खाते हैं? बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, वो जो खा के भागते हैं फास्ट फूड? नहीं वो तो दूसरी वाली खाने वाली चीजें होती है। नहीं फास्ट फूड रेस्टोरेंट वो वाला। रेस्टोरेंट वाला। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कौन खाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप मत खाइए। ओह शुक्रिया आपका। नहीं ऑफ कोर्स। अब आप खाइए, आप क्या करिए, उनको खाने के बाद उनके डब्बे होते हैं, सुंदर से उनके डब्बे होते हैं, बड़े सुंदर से डब्बे होते हैं उनके। आप उन डब्बों को बचा के रखें, सारे इकट्ठे करके बचा के रखें, ठीक है ना? अब एक बार आपने बचा के रख लिया, आपने करना क्या, आपने उनको जाके रिसाइकलिंग की जगहों पे जाके बेच देना, उनसे आपको मिलेंगे पैसे, आगे पैसे भी आएंगे। अब वो पैसे आप लाके हमें देंगे, हम जाके उनको इन्वेस्ट करेंगे और आपका रिटर्न देंगे आपको। ओ आइडिया भी नया, जिसमें मुझे कूड़े में भी नहीं जाना पड़ना, और कंपनी भी अब डिफरेंट होगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। चले मैं ले आया पैसे, तो किधर इन्वेस्ट किधर करेंगे आप अब? जी वाटर बॉटलिंग कंपनी मेरे दोस्त की, 0 इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। अरे देखिए परेशान मत होइए, आप पानी पीजिए ना, ढक्कन खोल के पानी पीजिएगा, पानी पीजिए। रोजी जरा और भी लाना, पानी पीजिए। ये पानी रखें आप अपने पास, चुल्लू बनाएं, उसमें डालें और डूब मरें। मुझे नहीं करनी इन्वेस्टमेंट आपके पास, मैं जाता हूं किसी और के पास, जो ना मुझे कचरे में भेजेगा और ना हर चीज उसकी गोल घूम के पानी पे आएगी। बाय। The Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment. It's the most beautiful feeling in the world. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू फिल्मी सफर। यस आई नो फॉर मी इट्स बिन अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप, थोड़ा सा गैप आ गया था, पर इस गैप के बीच में एक कमाल की चीज़ हुई। मैं अपनी सीट पे मूवी थिएटर की बैठे बैठे आंखें खोलते खोलते बंद ही नहीं कर पाया। Almost 2 hours and 40 minutes of extravagant, amazing, adrenaline driving rush. And I will call that Mission Impossible. हाँ जी, टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल। उस फिल्म के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। आई मीन ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन होती है आपको एक फिल्म की। व्हेन यू गो टू वॉच अ फिल्म, व्हेन यू गो वॉच समथिंग, यू हैव अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन व्हेन दे हैव हाइप्ड इट टू अ पॉइंट दैट इट विल बी गुड। सो यू इन योर माइंड समवेयर थिंक ओके आई एम श्योर इट विल बी गुड, बट प्रोबब्ली नॉट दैट गुड। या दिस वाज दैट गुड। ये वो इतनी अच्छी थी और भी अच्छी थी। और टॉम क्रूज ऑब्वियसली कैमरा के इफेक्ट्स की वजह से ये लोग थोड़े से यंगर तो लगते हैं जब हम इनको इंटरव्यूज वगैरह में देखते हैं। इन रियल लाइफ ही ऑब्वियसली हैज एज्ड अ लिटिल बिट मोर, बट ड्यूरिंग द फिल्म, आई मीन देखो हम ऑडियंस हैं, हम फिल्म देखने जाते हैं, इनको रियल लाइफ में हम इनको फॉलो नहीं करते। ये नहाने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, अपने ग्रोसरी लेने जाते हैं, हम तब वो जब क्या कर रहे होते हैं, none of us really care. I don't think we do. I mean, some of us do, and I think there's an industry and a market for that, जो जिनको पता होना चाहिए कि टॉम क्रूज कौन से बादाम खा रहा है, कि टॉम क्रूज कौन सा दूध पी रहा है. Maybe they want to be a Tom Cruise or something. I don't know. But for people like myself, and I think for film buffs and watchers, I think the main aspect is कि उस टाइम पे जब आप देख रहे हो जो आप देख रहे हो, वो आपको कैसा लग रहा है. And Tom Cruise looked fantastic. He looked young. He looked energetic. His entire, मेरा ख्याल है उनकी entire energy और जो उनकी असलियत की एक energy है, और मैं ये पहले भी दूसरे एक्टर्स के इंटरव्यूज में भी सुन चुका हूँ, दूसरे टॉक शोज में भी सुन चुका हूँ कि इनकी जो एक जो आपकी एक पर्सनल एनर्जी होती है. जैसे जब हम बात करते हैं, एक बार जब मैंने पीछे एक आप लोगों को एक रिव्यू दिया था एक फिल्म का आदि पुरुष, और मेरा सर ऐसे झुका हुआ था, एक एनर्जी थी, वो एनर्जी ट्रांसफर हुई आपकी तरफ, एंड यू गॉट टू सी हाउ आई वाज फीलिंग अबाउट व्हाट आई वॉच्ड. तो अब ऐसे इनकी एक एनर्जी, जो टॉम क्रूज की खुद की एक एनर्जी है, जो एक पावर है, जो एक जुनून है इनको फिल्मों में काम करने का, फिल्में बनाने का. You know, it's so funny. I look at him as like the Dubai of an actor, like Dubai being a place that wants the best of the best. In the Middle East, they're creating insane things like flying cars, and they have the Burj, and it's like they want to attain the unattainable. They want to achieve what is
Impossible. So ideally suiting a Tom Cruise kind of a character as a human being for the title also, Mission Impossible. Dead Reckoning, amazing movie. The storyline, of course, continues based on, this is a mission whether you're willing to accept it or not. Interesting ये होगा जो मैंने अभी देखा नहीं है इसका हिंदी dubbed version. That would be interesting. हिंदी में, उर्दू में, whichever language. इसका वो dubbed version, I am going to watch that just to kind of see that do I still get the same kind of impact that I would get watching it in English. तो I mean explain करते हुए तो मैं आपको हिंदी में, उर्दू में, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. But at the end of the day, the language that it is made in is what most probably transpires what it's trying to say the most. So देखेंगे, we'll see how that goes, but 2 hours 41 minutes approximately is what I believe the film time is. And शुरुआत से ही आप वो stunts देखोगे, वो sequences देखोगे जो आपको obviously आपको लगा होगा कि we've probably seen more dangerous stunts, crazier stunts, but I think the surrounding of the impact of the history of this franchise, जो Mission Impossible की franchise रही है, इसके साथ एक लोगों का connection है. जैसे हमारे James Bond साहब हो गए, उनकी Bond films आती हैं तो action वगैरह तो we've seen in other films that is better, but there's the essence of the energy of a dynasty or a creation or something that is something that we're familiar with. And Mission Impossible के साथ एक वो familiarity थी, वो comfort zone था that always blows you out of the water. आप लोगों ने, काफी लोगों ने वो टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा इन्होंने जो मोटरसाइकिल का स्टंट किया. Insane. I mean, obviously very powerful and I mean, बस मैं टॉम क्रूज साहब को इतना बोलूंगा कि सर देखो, स्टंटमैन है, उनका काम है, उनकी यूनियन, उनको भी काम करना है. अगर आप सब कुछ करोगे तो कोई और क्या करेगा? How will other people earn? We got to be a little fair, Mr. Cruz, but it's okay. You know what? Everybody appreciates your efforts, and I think you did a fantastic job. Motorcycle cliff jump with a parachute. हाँ जी, cliff से उन्होंने cliff और ऊंचा करके बनाया एक ramp. You'll see it on the in the making of it, and I'm sure on these TikTok videos, that went completely up, and he jumped off of it, and then jumped off the motorcycle, comes down, parachute opens, and apparently he gets onto a train. I mean, yes, again, impossible, absolutely, but does it happen? It's happened, and we get to view it. तो अगर आपने देखी नहीं है, ज़रूर देखिएगा. एक बार देखिए, most probably आप दोबारा भी देखेंगे. I'm going to probably see it twice. And अब जब हम अपने ratings के काम पे चल ही रहे और अपनी ratings हम कर ही रहे थे, तो definitely 5 is my top. 5 plus is what I would say. Now, all the other actors also, you'll see some new characters. You'll see the old crew back together from the other Mission Impossibles in there. That'll create obviously that familiarity, that comfort zone for you. And the pace is what is the best part. इसकी जो एक speed है इस film की, वो जिस तरीके से एक के साथ एक लिंक जोड़ती रहती है, आप उसी टाइम पे आप बिल्कुल सिमेट्रिकली उसके साथ आप चलते रहते हो, जहाँ तक मेरा ख्याल है. ऑफ कोर्स मेरे अगर अपोजिंग थॉट्स हैं, मेरे अगर अपोजिंग कोई कमेंट्स हैं और किसी के रिव्यूज़ हैं, प्लीज़ हमें भेजिएगा. आप देखेंगे हमारे ईमेल नंबर नीचे आगे पीछे थरथराता रहेगा, एज आई ऑलवेज से. तो कभी भी वहाँ से पकड़ लीजिए, कॉन्टैक्ट अस, लेट मी नो, let our team know if you have any further information about this film and about comments that we can describe otherwise. और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ surprise, ये सारे एक्शन के बाद all of a sudden I'm a Barbie girl in a Barbie, ये हो गया. तो उसके बारे में हम एक टाइम पे बाद में फिर बात करेंगे. But Barbie World and Mission Impossible, these are kind of the two big summer films. And I yeah, no, अब Barbie के बारे में तो अब मेरा ख्याल है दुनिया बहुत बोल रही है, efforts तो बहुत अच्छे डाले. I think they tried to make a really good film. But इस वक्त के जो genre और जिस direction में एक फिल्म को एक मैसेजिंग होती है, मे बी शायद उसकी मैसेजिंग गलत तरीके से लोगों की तरफ पहुंच रही है. बट एक है I'm a Barbie girl, then you've got Mission Impossible. तो जैसे हमारे हैं वो हमारे जो दो मस्ताने आपको मिलेंगे, तो उनको ज़रा कंपैरिजन करके आपको क्या लगता है, दो मस्ताने में से मिशन इम्पॉसिबल का टॉम क्रूज कौन हो सकता है और बार्बी की बार्बी कौन हो सकती है? ये ज़रा हमें लिख के बताएं. अगेन ऑन द ईमेल एड्रेस below. It'll be fun and I'll definitely, if I do get an answer for that, I will definitely announce it next time I'm on air. So thank you so much for joining me on Filmy Safar. It's always a blast and it's always fun, and I look forward to meeting you again soon with another review. And please, again, like I always say, वो देखिए, वो करिए, जिससे टाइम ऐसे निकले जैसे पता ही नहीं लगे क्या हुआ है, because that is what is entertainment, that is what is enjoyment. So be happy, enjoy yourself. On behalf of Awaz Entertainment and myself and Mastane and our team and Oklu, I always forget to mention them, so I'm sorry, Oklu also. Thank you so much for joining us on Filmy Safar. I'm Manish, and I will see you again. Thank you.
जी नाजरीन, I hope you enjoyed the rest of the show. I hope he cut out half the stuff that I said about Pakistan. आज ये बहुत बोले और अल्लाह करे आइंदा भी बोलते रहें. Establishment, I love you. I will Yes. always be an establishment man. No. I will always be a lafafa. Remember that. Tout, मैं हूँ. Anyway, continue. तो बस अब हमारे पास वक्त नहीं रहा क्योंकि हम इतना बोले इतना बहुत ज़्यादा कि अब वक्त नहीं रहा कुछ और बोलने का. हाँ. So we'll tell you a couple of really quick jokes, really bad ones. Again? हाँ. Again मतलब अब ये शो का हिस्सा बन चुका है. Oh shit. Just like the establishment is part of Pakistan. It's part of Pakistan. Yeah. Dad jokes are part of this show now. And we'll end off with a couple of really quick ones. और फिर हम आप लोगों को घर जाने देंगे. मतलब आप तो घर पे ही हैं. तो घर पे ही हैं आप. हम घर चले जाएंगे. अपने घर, आपके नहीं. आपके घर आ जाएंगे बेगैरतों की तरह. आप प्लीज कुछ अपनी मेहमान नवाजी का वो प्लीज बंदोबस्त कर लीजिएगा. And we'll be there. Yes. So my wife the other day said to me that I should do lunges. Oh shit. To stay in shape. I think she thinks I'm out of shape. So she told me to do lunges. So I thought, yeah, well, that would be a huge step forward. Wouldn't it? That was horrible, man. That was, I wanted to be horrible. My doc told me I was going deaf. Your dog? My doc. Oh, your doc? My doctor. Looks like I'm... मेरे डॉक्टर ने. Doctor ने looks like I'm getting deaf, man. I think it's because of my husky voice. Oh, it's sexy. My doc told me I was going deaf. That news was hard to hear. And last one, and this actually happened not to me but to a neighbor of mine because she has a cat. She asked her cat, what is 2 minus 2? The cat said nothing. Why does it have to be a cat? Couldn't it just been like your neighbor's son? Yeah, no, because cats can talk. That's why neighbors' sons don't. Cats can बस talk. इसी बात पर इनकी मैं यहाँ से इजाजत चाहूँगा. बस इजाजत. I love it when people get angry and they're fighting and they're debating and they're like इजाजत. भाई इजाजत दीजिए. इजाजत दीजिए. What if we don't give इजाजत? मुझसे नहीं. नहीं भाई आपको आपको नहीं दे रहे. कोई इजाजत नहीं दे रहे. नहीं भाई. फिर क्या करेंगे? तुम्हारे पास है इजाजत? नहीं मेरे पास नहीं. इनके पास भी नहीं है. नहीं ये नहीं मतलब होगा क्या फिर उसके क्या बाद? कर लोगे अब? क्या नहीं करेंगे? इजाजत तो क्या दें? ये point है ये ना. Anyways, I think they want us to give इजाजत to the show because they really want to go home. चलो भाई pack up करते हैं. We'll be back again, fellas. Package it. Package. Thanks for watching Do Mastane and we love you establishment. We love you. Yeah. Right? Djokovic. And Djokovic, yeah. Oh. I still am a Djokovic guy, man. I don't care. Khud Hafiz. Yeah, Khud Hafiz. And I love you, establishment. Establishment, I love you. Do Mastane is presented by Oklu Reimagine Entertainment.